Yes, good morning, everyone. Good morning. So welcome to the new session. So we are starting with the first chapter of the 12th standard of like chemistry is solid state. So we are starting with the chapter solid state. So somehow like some theory and numerical part. So when we talk about solid, okay. So what are the general characteristics of solids? Like we have learned this in the school, like solids are rigid, solids are incompressible. एवरी लाइक हमजा आपने जो बोला हार्ड लाइक वो हमेशा नहीं हो सकता. डिपेंड, जैसे ग्रेफाइट, इफ टॉक अबाउट द ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है और डायमंड दोनों कार्बन ही है बट एक हार्ड एक सॉफ्ट, सो दैट डिपेंड्स. So general properties अगर मैं बात करूँ, जैसे one of the point was kept by the Prathemesh, and that was the molecules are closely packed. So we can say the particles, the constituent particles are closely packed. So this was some general characteristic of the solid. So screen number 1. So moving to the next. Now solids, so please ध्यान देना, solids are classified into two. एक होता है true solid and another one is called as pseudo solid. Pseudo solid. Now what is true solid and pseudo solid? Now true solid are the solid which have definite volume, and shape, show slow diffusion, even show low vapor pressure. So this is what some point for the true solid. And pseudo solid, we can say pseudo solid loses shape on long standing. Even they can like easily distorted. They can be easily breakable by mild force. So now यहाँ पे like आपको बता दूँ, even true solid is also called as crystalline solid, and pseudo solid is also called as amorphous solid. Clear? Vainavi, clear? Now if I talk about the examples, example for this true solid, we can take example as NaCl, we can take as KCl, we can have like some sugar, silver, and for the pseudo solid we can take like rubber, plastic, even we can take an example as glass. Is everyone clear? समझा सबको? So next we'll see, ध्यान देना, देखो So we'll say distinguish between crystalline solid and amorphous solid.
तो आपको बता दूं बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स के लिए डेफिनेटली पूछते ही है ये, ठीक है। राइट द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड. So as I have said, we are in the course where we cover board, correct? So board point of view जो पार्ट होगा वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा. And please have a daily reading habit of टेक्स्ट बुक. जो भी टॉपिक हम कवर करेंगे आपको टेक्स्ट बुक से रीड करना है एक बार, ठीक है. ओके, सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट, so a very simple basic difference between crystalline solid and amorphous solid are the arrangement of the particles. So we can say in crystalline solid, the particles are arranged in well mannered. Where we can say in the amorphous solid, so particles are not arranged in proper manner. So ये basic सा difference है amorphous solid and crystalline solid में, ठीक है. Second point, I can say that the crystalline solid have definite shape, where amorphous solid has irregular shape. Same, crystalline solid show specific melting point, where the amorphous solids show a range of melting points. Range of melting points. So please ये चीज पे ध्यान देना. Like for example, अगर आप NaCl का melting point determine करोगे, उसका particular melting point fixed होगा, but अगर कोई amorphous solid तो उसका melting point fixed नहीं है. They have a range of melting point. Okay. Similarly, if I say about heat of fusion, so crystalline solid have a definite heat of फ्यूजन. अभी सब लोग के दिमाग में होगा, अरे सर फ्यूजन क्या होता है, हीट ऑफ फ्यूजन क्या हुआ, तो वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी. amorphous solid do not have definite heat of fusion. अभी सबके दिमाग में ये है कि सर फ्यूजन क्या होता है. मैं आपको बता दूं, फ्यूजन इज ए प्रोसेस वेयर ए सॉलिड गेट कन्वर्ट इनटू लिक्विड. अभी सबके दिमाग में सर ये मतलब मोस्टली फ्यूजन का मतलब होता है एसोसिएशन, जॉइनिंग, कंबाइनिंग, सब लोग डाल रहे हैं, बट नहीं. यहाँ पे इन दिस केमिस्ट्री द फ्यूजन स्टैंड फॉर द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड. Conversion of solid to liquid. So there is something about heat involved in this process. When a solid is converted into liquid, there is something heat required, heat involved in the process, and that heat involved when a solid is converted into liquid is called as heat of fusion. Is everyone clear? Is everyone clear? Heat of fusion क्या होता है? Okay. And my last point, the fifth, जो कि अगेन सबके लिए नया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर. Anisotropic in nature. And amorphous, we say amorphous are isotropic in nature. Yes, Sakshi, don't worry, मैं वापस बताता हूँ. Isotropic in nature. Now, वापस बता दूं, heat of fusion is first understand what is fusion. Fusion is a process where solid is converted into liquid. Fusion is a process where solid is converted into liquid. Okay, and the heat involved during conversion of solid to liquid, that is called as
heat of fusion. Clear? Kushagra? साक्षी समझा आपको? ओके. नाउ अभी ये क्वेश्चन है कि सर एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक क्या होता है? डेफिनेटली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट स्क्रीन पे, बट लेट अस फर्स्ट सी द एग्जांपल फॉर द क्रिस्टलाइन सॉलिड. द एग्जांपल्स आर NaCl, metals, diamond, and the examples for the amorphous solids are like rubber, plastic, even you can take as a glass. So these are the examples. Now let us see what is anisotropy and what is isotropy. ठीक है, चलो. So दो नया टर्म जो हमने आज सॉलिड स्टेट में देखा है, अभी तक हमने नहीं पढ़ा था इसको. So anisotropy and isotropy होता क्या है ये चीज, इस चीज को हम लोग यहाँ पे समझेंगे. Like consider we have a arrangement of the cations and anions. देखना ध्यान से. So the bigger circles are the anions and the smaller circles are the cations. So please ध्यान से देखो. Yes. So can you identify which one is the crystalline solid? So ये anions है. This one are the cations. So जिसको भी डाउट है कि सर ये सर्कल क्या है, तो आप देख सकते हो, the smaller one the cations and the bigger one the anions. समझ में आया? Clear? Yes, so as you can see, we have an arrangement of the cations and anions. Obviously the first one is crystalline, the second one is amorphous. Attract each other and keep the solid binded. Yes, please, correct. But यहाँ पे एक जैसी एग्जाम्पल शो करना है मुझे, तो आई कैन शो द अरेंजमेंट. ऑब्वियसली आयनिक सॉलिड्स क्रिस्टलाइन में आते हैं, बट मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल शो करने के लिए, इवन आई कैन टेक एज द बिगर वन इज बी एंड द स्मॉलर वन इज ए बी एग्जाम्पल ले सकता हूँ, नो इशू. बट ऐसे ही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए एक बिगर सर्कल एंड स्मॉलर सर्कल का एग्जाम्पल ले रहा हूँ. अब यहाँ पे मेरे को शो क्या करना है, देखो. Like if I see this direction, I have only the anions, the bigger circle I can say. In this direction, I have only like cation anions, the smaller and bigger circle. And in this direction, I have only this smaller circle. Yes. दिख रहा है सबको? बट अगर मैं इस डायरेक्शन में देखता हूँ, इस डायरेक्शन में ध्यान से देखना, यहाँ पे स्मॉलर सर्कल और बिगर सर्कल दोनों आ रहा है. मैं अगर इस डायरेक्शन में देखता हूँ तो भी मेरे पास स्मॉलर सर्कल बिगर सर्कल दोनों आ रहा है, करेक्ट. और मैं इस डायरेक्शन में देखूंगा तो भी मेरे पास स्मॉलर सर्कल एंड बिगर सर्कल आ रहा है, करेक्ट. नाउ व्हाट इज दिस? यहाँ पे मैं ये शो करना चाहता हूँ कि क्रिस्टलाइन में अगर आप देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपी का डायग्राम ध्यान से देखना, एनाइसोट्रॉपी का डायग्राम, वहां पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हर एक डायरेक्शन में डिफरेंट अरेंजमेंट है. एवरी डायरेक्शन हैज डिफरेंट अरेंजमेंट इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड.
where amorphous solid, every direction have similar, almost nearby similar arrangement. Yes or no? If you agree with me, please. Yes, correct. So in crystalline solid, every direction has different arrangement. यस माइक, वही मैं बता रहा हूँ. अगर आप यहाँ पे देखोगे एनाइसोट्रॉपी में चेक करो, एक डायरेक्शन में खाली बिगर सर्कल आ रहा है, एक डायरेक्शन में खाली स्मॉलर सर्कल आ रहा है, और एक डायरेक्शन में दोनों सर्कल आ रहे हैं. करेक्ट माइक, इतना समझा आपको? हाँ क्रिश, आपको भी समझा? नहीं क्रिश, डायग्राम ध्यान से देखो एनाइसोट्रॉपी का. डायरेक्शन चेक करो, हर एक डायरेक्शन में अरेंजमेंट सेम है क्या डिफरेंट है? Every direction has different arrangement. Krish, Aditya, yes. Similarly, if you observe the isotropy में देखो, हर एक डायरेक्शन में there is something anions and cations, मतलब bigger circle and smaller circle हर एक डायरेक्शन में आ रहा है. Yes or no? Yes. तो यही चीज यहाँ पे हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि क्या होता है. Having, so please, having different arrangement in different direction is called anisotropy, and having nearby or similar arrangement different direction is called isotropy. Clear? अभी ये डिफरेंट डायरेक्शन से होता क्या है? लाइक अगर मैं कोई फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, शुभश्री ध्यान से सुनना, व्हेन आई लाइक मेजर द फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं मेजर करूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू x मिलेगी, बिकॉज यहाँ ये एरो का अरेंजमेंट डिफरेंट है. यहाँ पे मुझे वैल्यू y मिलेगा और यहाँ पे मुझे वैल्यू z मिलेगा. That means the values of the physical property are different in different direction, and that is called as aniso. So this aniso term क्या बताता है? Something different. ठीक है? And in case of amorphous solid, if I measure the values, यहाँ पे मुझे x मिलेगा, यहाँ पे भी मुझे x मिलेगा, यहाँ पे भी x मिलेगा, because somehow they have all the similar arrangement in all the direction. So the values of the physical property, जैसे refractive index, वो भी similar होगा. So this word iso indicates similar. Clear? समझा? Is everyone clear? Subhashri? Krish? Kushagra? ओके. वैनवी आपको समझा? मयंक, लक्ष्मी, very good. So I hope everyone are clear with the anisotropy. So anisotropy is shown by crystalline solid and isotropy is shown by amorphous solid. प्रीत समझा आपको? Very good. चलो. So the next we'll see what is polymorphous and what is isomorphous. Now, polymorphous means when a solid, when a single solid
show two or more crystalline form on change in temperature is called polymorphous. So even the word indicate poly means what? Two or more. Morph indicates crystalline form or crystalline structure. So polymorphous. And isomorphous means when two or more solid show similar crystalline form is called isomorphous. Clear? Is everyone clear with polymorphous and isomorphous? Is everyone clear with polymorphous and isomorphous? Yes, मैं क्या नहीं समझा इसमें आपको? Polymorphous means जब एक single solid show different structures, it is called as polymorphous. Isomorphous means what? When two or more solid will show similar structure, it is called as isomorphous. Clear? Mind? Clear? Okay, please copy karo. Yes, Aditi. So the next is classification. तो ध्यान से देखना. Classification of crystalline solid. Classification of crystalline solids. Now, crystalline solids जो होते हैं based on the constituent particle. A particle can be ions, can be atoms, can be molecule. Based on this, we have different crystalline solids. Crystalline solid. So please, ध्यान से देखो. So crystalline solids so can be classified into four types. So please, based on constituent particle, ठीक है? So पहला है, the first one is molecular solid. Molecular solids, ionic solids, metallic solids, and covalent solids. Now, if we talk about the molecular solid, that means constituent particles for the molecular solids are molecules. Ionic solids, that means ions. Metallic solid में क्या होता है कि metal ions in delocalized electron. Metal ion in delocalized electron. And covalent solid, obviously the atoms. ठीक है? तो मैं आयनिक सॉलिड्स की अगर बात करूं तो आयनिक सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होगा? ऑब्वियसली वी हैव आयनिक बॉन्ड. मेटालिक सॉलिड में वील हैव मेटालिक बॉन्ड.
the force of attraction present, metallic bond. Covalent solid obviously will have a covalent bond. Correct. अब मैं मॉलिक्यूल्स की अगर बात करूं तो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे शो करूंगा. But if I talk about the example for the ionic solid, we can take NaCl, we can have MgO, we can have CaF2. If you talk about the example of metallic solid, we can take copper, we can take iron, we can take silver. So these are what examples of metallic solid. Covalent solids की अगर बात करूं तो एग्जाम्पल आप ले सकते हो सिलिकॉन कार्बाइड. Correct. We can have silica, SiO2. Even we can have carbon ka diamond. Even we can have graphite also. So these are what the example for the covalent solid. Now, as we have talk about the molecular solid, so molecular solid जो है वो हम लोग classify करते हैं 3 टाइप में based on the molecule present, because molecule can be non-polar, they can be polar, even they are hydrogen bonded. So ऐसे 3 टाइप के मॉलिक्यूल पॉसिबल हो सकते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल. तो व्हेन आई टॉक अबाउट नॉन पोलर, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने पढ़ा इस चीज का, गैसियस स्टेट में पढ़ा था. इफ यू रिमेंबर, नॉन पोलर में आपके पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं लंदन फोर्स. इफ यू रिमेंबर, इट इज कॉल्ड एज लंदन फोर्स. पोलर में जो प्रेजेंट होता है, पोलर में उसको हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन. याद आ रहा है सबको, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन. एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? दैट विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्ड. Now if I take the examples for the non-polar, आर्गन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड्स, हाइड्रोजन गैस, आयोडीन गैस, दिस आर व्हाट द एग्जांपल्स फॉर द नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. पोलर में आप एग्जांपल ले सकते हो HCl, यू कैन टेक SO2, है ना. यस मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, डोंट वरी. हाइड्रोजन बॉन्डेड ऑब्वियसली विल टॉक ऑन आइस, दैट मीन्स वाटर सॉलिड ना. अच्छा, अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इसका लंदन फोर्स मुझे नहीं पता है, डाइपोल डाइपोल पता नहीं है, तो आपको बता दूं जैसे कि आर्गन होता है, लंदन फोर्स इज अ वेरी वीक फोर्स विच इज प्रेजेंट बिटवीन दी नॉन पोलर गैसेस, मतलब जिनको चार्ज होता ही नहीं है. आर्गन इज टोटली न्यूट्रल, कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा. करेक्ट, उसको हम बोलेंगे लंदन फोर्स. डाइपोल डाइपोल में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव HCl, नोट करो यहाँ पे. तो HCl में क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, एंड दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देयर विल बी इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग टुवर्ड्स क्लोरीन, जिसकी वजह से क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा. सिमिलरली यहाँ पे भी हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव. तो यहाँ पे क्या होगा, the chlorine of one HCl will have a interaction with hydrogen of another HCl. So this interaction between two polar molecule is called as dipole dipole interaction. समझा मयंक?